हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि तुम सब लोगों को पता है, हम लिनक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा लिनक्स में। आज जो मुद्दा है प्रोसेस और प्रोसेस मैनेजमेंट के, अभी तक जो हमने पढ़ा लिनक्स वो सब बेसिक और मॉडरेट कह सकते हैं। अब जो है ये है एडवांस। ये सब सीख लिया ना, मास्टरी हासिल करती इसी में नहीं, बाकी ओएसओ में। यहाँ हम लिनक्स पढ़ रहे हैं तो ओब्वियसली लिनक्स में तो मास्टर हो जाएंगे, बाकी ओएस के बारे में ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा। बाकी ओएस भी सेम ही काम करते हैं, बस फर्क कहाँ है, यूजर इंटरफेस और थोड़ा बैकग्राउंड में, बाकी सब चीज़ और कुछ खास फर्क नहीं है। तो वो सब चीज़, लेकिन जो पीछे बैकग्राउंड में काम है वो तो सबका सेम ही है। भाई तुम्हें कुछ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ही करेगा ना। तो यही बात है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये है मास्टर। यहाँ पे जरा ध्यान से दें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट वी आर गोइंग डिस्कस हियर, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस। व्हाट इज अ प्रोसेस? बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज अ प्रोसेस, many times. So let's see the simple definition. A process is an instance of a running program. A process is an instance of a running program. Just imagine a program. I can say I just open an Firefox. I search their uh, best YouTube channels. Then it's a process. It's a running program. A process is an instance of that running program. What I searched there, small instance. Are you getting me? If you are not getting me, I will show you in a practical. No worries. Don't get confused. Here, just see the definition on. A process is an instance of running program. It includes the program code, its current activity, and resource allocated to it, memory, file handling, etc. वगैरह वगैरह. So this is a simple definition. You can pen it down and write it down, whatever. Then process versus program. Main difference is very important. A program is a static code on disk. Make it clear. A program is a static code on disk, and a process is the program loaded and executed in memory. After some time, we are going to see a diagram. By using that diagram, it will make you clear what is the difference between a process and a program. So just remember, a program is a static code on disk, and a process is the program loading and executing in memory. Then we can see some PID and PPID. Each process has a process ID that's called PID, process ID, and a parent process ID, PPID. What's a parent process and child process? We'll see them later in depth. Then another concept we will have threads. What are threads? Threads are the lightweight process that share the same address space. So main thing, same address space. Process have a separate address spaces. Process have a separate address space, but threads have same address space. So don't we get confused between thread and a process. Then we will see some fog duplication of a process. We will see them in detail. So process states, what are the different states of a process? I will show you a diagram. By that I will try to make it clear. यहाँ से एक process आती है. Here comes a process that's called a new process. It's admitted. It will go for ready state. Here it may queue, for example. A process come here, just I can calculate the code, simple code. And I try to execute it, it undercodes the ready queue. Then it will go for running state, under running state. If it needs some operation of input output, unfortunately that the input output resources are not available, then it will go for waiting state. It will wait there of some time. If when its waiting time will be over, it will go again, then ready state, then it will go again for running state. If its resources are available there, then it will go for terminated. Whatever the task about, it will complete its task. So let's see the definitions of this new. When a new process is being created. Running. A process is said to be a running state when instructions are being executed. ये भाई ये
वेटिंग, द प्रोसेस वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये वाला जो मैं भी बताया था, द प्रोसेस वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। रेडी, द प्रोसेस वेटिंग फॉर ए प्रोसेसर। यहाँ पे जब होता है ना, तो ये वेट is waiting for the processor. Terminate the process finishes execution, खलास। तो ये था। तो हम कहाँ थे? तो ये जो मैं अभी बताया, और भी कुछ है जैसे ज़ोंबी। ज़ोंबी का क्या मतलब है? चाइल्ड हैज टर्मिनेटेड बट पेरेंट हैज नॉट वेटेड। लो भाई, बच्चे का काम हो गया, पापा अभी भी वेट कर रहा है। ये क्या सीन? इसे कहते हैं ज़ोंबी। और एक है ऑर्फन, पेरेंट टर्मिनेटेड बिफोर चाइल्ड। बताओ, पापा का जो पापा वैसा नहीं बोलेंगे हम, पेरेंट प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है वो पहले ही खत्म हो गई, बच्चा अभी अंदर ही है। मतलब अंदर ही का मतलब पेरेंट जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अभी एग्जीक्यूशन नहीं थी कि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, फंस गई। इसे कहते हैं ऑर्फन, पीपीआईडी वन, एडॉप्टर्स ऑर्फन और ज़ॉम्बी। हो सके तो मैं इनका तो मैं दिखाऊंगा डेमो, ये ज़ॉम्बी और ऑर्फन क्या चीज़। ये जो डायग्राम हमने अभी दिखाया रनिंग रेडी करके, ज़ॉम्बी कहाँ से आता है वगैरह। This was all about his story. Hope you so guys like this video. Thank you. Take care.